दोस्तों, my young friends, आप सब कैसे हैं? आप fighting fit हैं? You, the youth, must be posting similar status messages on your FB account. क्यों दोस्तों? आप share क्यों नहीं करते कुछ? I would like to share a quote. चलिए, सुनाइए. Well, in a day when you don't come across any problem, you can be sure that you are traveling in a wrong path. Whoa. Anybody else? Hello, sir. I would like to share a quote also which inspires me a lot. Whatever you think, that you will be. If you think yourself weak, weak you will be. If you think yourself strong, strong you will be. That is absolutely brilliant. Whose quote is this? Swami Vivekananda. Well, it had to be, didn't it? I mean, this is Swami Vivekananda's 150th year. Well, what better person to quote than he? That's absolutely marvelous, my great friends. I was actually getting goosebumps while listening to all you people. क्या वाकई में किसी को जीवन की कठिनाइयों से इतना प्यार हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियाज मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन शो विवेकानंद आंसर्स और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट जयंत कृपलानी और हमारे साथ हैं दी रिवियर्ड स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट Vadodara, and Dr. Anuttama Banerjee, one of India's renowned psychologists, yani ki manovigyanik. A big hand for them. Anuttama ji और महाराज जी, आप दोनों का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है. मैं बहुत खुश होता अगर पूरे शो में ये सब कोट्स आपसे सुन पाता, बट हमें आगे भी बढ़ना होगा. Now, guys, folks, now I want to read out some lines which I have pre-marked in this marvelous book of stories from Swami Vivekananda. I have never heard a cow tell a lie. That's how the quote begins. I have never heard a cow tell a lie, but it is only a cow. It is not a man. So never mind these failures. Hold the ideal 1,000 times. And if you fail 1,000 times, make that attempt once more. पिछले एपिसोड में हमने अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने कई मुश्किलों के बावजूद भी एवरेस्ट की चढ़ाई की, उनकी कहानी को सुना और हम प्रेरित हुए. और आज के एपिसोड में हम उसी विषय पर और चर्चा करेंगे. समझ में आया दोस्तों? Sorry, it seems you want to ask me a question. Actually, I have a question, ma'am. I have a question for you. That is, whenever we face some difficult situations in the outside world, we can somehow manage to handle that. But if we face emotional turmoil in our life, in our very own life, we break down very easily. So my question goes to you as, how can we handle that emotional turmoils or tumultuous situations, and how to overcome that emotional turmoils, from that emotional turmoil? I would try to give your answer. I'll bring an example for all of us. Let's say when we stand in front of a tall building, very, very close to the tall building, we don't get to see the entire building. We get to see just the few floors. The reason is, when we are emotionally entangled, when we are emotionally very much disturbed, we can't have the end-to-end picture of our problem. So the first thing we have to do when we are emotionally very much disturbed, that we have to emotionally distance ourselves. We have to keep our reasons intact. Maybe at that time we are broken. I would rather say, acknowledge that emotion. Don't deny, cry, break down, but don't think of a solution right then. Think about it after some time when you have gathered yourself better. Try to look at it just like an outsider, as if you are a bystander. Ask yourself, if my friend comes to me with this problem, what would be my suggestion to that friend of mine? Probably then it will be easier for you to handle that difficult situation. Ma'am here says that step back from this deep emotional problem and don't overreact immediately, or don't react, think about it. Is there any similarity in the philosophy that... Yes, yes. स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं कि हमको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, ऐसे समय में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए. और जैसा मैडम ने बताया, उस समय आत्मनिरीक्षण नहीं होता है. जब हम बहुत इमोशनल होते हैं ना, तो उस समय अपने आप को संभाल लेना चाहिए. उस समय कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए. यू हैव टू पोस्टपोन योर डिसीजन. और बाद में आत्मनिरीक्षण करके, शांत चित्त से चिंतन करके हमको उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए. और ये आत्मनिरीक्षण में यदि हमारे लिए संभव नहीं होता कभी कभी, तो उसमें हम एक दूसरा सहारा ले सकते हैं. राइट डाउन योर प्रॉब्लम. वो राइट डाउन योर प्रॉब्लम इटसेल्फ will, you may not show to anybody, that will solve your problem, or you will be able to understand your problem.
और एक और बात है कि काउंसलिंग, यदि कोई भी आपका एक परिचित व्यक्ति हो जिस पर आपका विश्वास हो, उससे आप अपने मन की बातें कहें, उससे काफी आपको मार्गदर्शन मिलता है। बल्कि ये हो जाता है, हमने कभी भी ऐसा भी हमने देखा है कि उसी से उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं 90%। स्वामी जी, दैट इज आफ्टर, पहले हम स्टेप बैक करें, लुक एट द प्रॉब्लम डिस्पैशनेटली। यस, उसके बाद अगर शायद एक डिसीजन नहीं, हो हमारा कि ये मैं कहना है काउंसलिंग कि जाके डोंट टेक एनी एक्शन। ये जो इंस्टेंटली डिसीजन ले लेते हैं ना, हाँ, कि हमने आत्महत्या करने के लिए ले लिया, बाद में पछताते हैं, बच जाते हैं तो पछताते हैं, नहीं तो फिर दूसरे लोग पछताते हैं। परंतु ये नहीं होता यदि वो उसी समय यदि किसी के पास काउंसलिंग के लिए जाते, और या तो यदि वो भी नहीं होता प्रार्थना करते या स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ लेते। जैसा अन्ना हजारे ने क्या किया, आपको तो मालूम होगा अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे ये रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे, दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने जेब से कागज निकाला, डायरी निकाली, लिखा मेरी आत्महत्या के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, और ट्रेन आने की राह देख रहे थे कि वहां पर जंप कर देंगे। ट्रेन आने में थोड़ी देर हुई, तब तक में उनको याद आया कि उनकी बहन की शादी होने वाली थी 6 महीने बाद। लगा कि मेरी आत्महत्या के बाद मेरी बहन का क्या होगा, तो उन्होंने पोस्टपोन किया। फिर दूसरे दिन सुबह दिल्ली प्लेटफॉर्म पर न्यूज़पेपर खरीदने गए। वहां उन्होंने स्वामी विवेकानंद का एक फोटो देखा, तो उन्होंने कहा मुझे फोटो चाहिए। तो उन्होंने कहा ये फोटो नहीं, ये तो स्वामी जी की किताब है, उस पर फोटो विवेकानंद जी का। बोले मुझे किताब पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर फोटो अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने किताब ली, किताब पढ़ी, बस परिवर्तन हो गया, क्योंकि उनको उसका उत्तर मिल गया। वो अभी तक क्यों आत्महत्या करना चाहते थे, उनको लगता था कि जीवन का उद्देश्य केवल मरना है, तो मैं क्यों ना मर जाऊं अभी कभी। So actually Anna Hazare did judge a book by its cover. बाद में वो किताब से, क्योंकि ये एक किताब भी आपको सोल्यूशन दे सकती है। Absolutely. Can I just ask Dr. Saab over here, what kind of problems, people come to you for counseling? We don't want their names, we don't want their backgrounds or anything, but कौन सी समस्याएं लेके आते हैं आपके पास जिसके लिए उन्हें काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है? Actually, there is a huge range. If you So a few, that the young people, we are young, well, they are young here, who we are attacked by these problems. So if you could... few of them are some sort of a conflict that we suffer from, that we are confused. We don't really know what decision to take. So that's one part of it. There are few of us who also face certain difficulties to attain our goals, and we break down, we get frustrated, we feel that it's the end of the world, and they get so much tormented that, as Swamiji, as he very correctly mentioned, that they feel that, there is no point living this life. So they also feel like ending their lives, and there are also stories of heartbreaks in this particular age, as we all know. So these are more or less the situations that we face in our counseling chambers. अच्छा, इम्तिहान को लेके जो अभी बहुत कठिन परीक्षा होने वाली है, और स्कूल लीविंग, वैसे प्रॉब्लम्स आपके पास आते हैं? Yes, of course. I mean, in terms of, like when they're leaving the schools and they're choosing a new stream, that kind of problem that you're talking about, yes. Also, like it's, for example, a person is not really sure whether I have to take this stream or that stream. Sometimes they also have a feeling that when I'm changing my school, or let's say I'm changing my college, it means I'm also leaving my friends behind. So that also creates some kind of emotional anxieties in them. So the change of world, totally. I think any kind of change, to be very honest, it makes us somewhat unsettled. And that is also something where we have to remember that. परीक्षा का भी टेंशन होता है। हमारे यहाँ तो हम लोगों ने 12 साइंस, पर्टिकुलरली जो लोग 12 साइंस में, उनको इतना टेंशन हो जाता है, उसके लिए हम अलग प्रोग्राम करते हैं, हाउ टू ओवरकम द टेंशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। राइट, उसका पूरा एक स्पेशल प्रोग्राम ही रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है, इतने एक्सपेक्टेशन रहते हैं पेरेंट्स के, कि उसके बाद में इतना जाना पड़ेगा, इतना रिजल्ट मिलेगा, उतना करना ही चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा, एज इफ माने पूरा एक whole family gets topsy-turvy. And the most important thing is, Maharaj, due to that tension, they can't really give their best shot. उसी के कारण, टेंशन के कारण और भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ तक और एक्सपेक्टेशन कितना। तो आप इनको क्यों काउंसलिंग करते हैं? इनके पेरेंट्स को खींचना, जो पेरेंट्स को भी करते हैं हम लोग, पेरेंट्स को भी करते हैं, पर लड़कों को भी काउंसलिंग की इसलिए जरूरत है कि समटाइम्स दे आर ओवर एम्बिशियस, नंबर 1, नंबर 2, वो लोग एक साथ बहुत सारा खाना चाहते हैं, एक ही प्लेट में एक साथ सब कुछ खाना चाहते हैं, साउथ इंडियन भी खाना चाहते हैं, नॉर्थ इंडियन भी खाना चाहते हैं, जापानी भी खाना चाहते हैं। और तीसरी बात है कि उसके अलावा ये जो इनके प्रॉब्लम्स में ओवर एम्बिशंस इज ओनली वन थिंग, ऑल
most important now problem that the students are facing, particularly youth community, is lack of concentration. कितने लोग हमारे पास आते हैं, मन की एकाग्रता का प्रॉब्लम है उनको। ये मन की एकाग्रता इसलिए प्रॉब्लम है कि उनकी जो attention level है वो इतना ज़्यादा divert हो जाता है। So is it ADHD? Is he talking? Not Yes. always. I won't really diagnose as ADHD. Yes, in ADHD we have attention-related problems, but what Maharaj is very correctly pointing out, that's more to do with other thoughts that distract us. And I'm sure even our young friends who are sitting over here, they have also experienced that at some point or the other time. That, you know, it's like when I'm sitting, after half an hour I'm realizing I'm reading the same line. And it's like, oh my God, what am I doing? You know, that sort That of happens to you? feeling. Yeah. It's a very common, you know, typical symptom that we all face. But I suppose there we have to understand that when we are getting distracted, as he very correctly said, probably the other thoughts are also demanding my attention because I'm not attending them when I'm supposed to attend them. Rather, if we can manage our time, if we can tell some of our thoughts, my dear thoughts, this is my time to complete this task of mine, I will address you later, than putting it under the pillow. I always believe it's very important for us to actually categorize those distracting thoughts than just denying them. Because otherwise, untimely, they might disturb us. अभी हम लोगों भी 30 साल से करीब मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। कई यूथ हमारे पास आते थे, कई लोग आत्महत्या के इरादे से भी आए, भगवान की कृपा से बच गए, सभी बच गए एक्सेप्टिंग वन गर्ल हु वाज टोल्ड बाय हर मदर कि बिटिया या तो स्मशान में शोभा देती है और या फिर अपने ससुराल में, तो फिर वो स्मशान में चली गई दूसरे दिन। एक्सेप्टिंग दैट गर्ल, बाकी ऑल वेर सेव्ड। फिर हमने कहा कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर चेंजिंग। Previously, the problems were more related to finance, money, this and that, unemployment problem, या फिर examination में result का। अभी later, I don't know whether you will agree with me, the problems, the type of problems are changing. It is relationship problem. Yes, I completely agree with you. एक लड़की मुझे फोन करके बोलती है कि बस मैं आत्महत्या करूं क्योंकि दूसरी एक पर्टिकुलर लड़की ने 3 दिन से मेरे साथ बातचीत बंद कर ली। लो अरे बातचीत बंद कर दी उसके लिए। Isn't it heartening that आप जैसे शख्स हैं वहां पर जिन्हें वो फोन करके ये आपके साथ बात कर सकती है। I think just a few years ago that would not have been there either. अच्छा, दूसरी बात है, आप जो expectations की बात कर रहे थे, yes, our parents have expectations and colleges have expectations. They want you to get 100% as a cutoff. वो it is something that my limited mind cannot. But what about the other pressure? एक और एक pressure है जो यार मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरे साथ सिगरेट पी लो, peer pressure यार, मर जाते हैं हम लोग peer pressure। तो वो कैसे हैंडल कर रही है? peer pressure का मैं बताता हूँ। I think you should better, you are psychologist. No, before getting into that, I would also just mention, as he very correctly, he was talking about, you know, how one girl finally, she could not be saved because what her mother had told. And we were also talking about the relationship problems where our, you know, the young generation, they feel कि अगर मेरा एक affair breakup हो गया तो पूरी जिंदगी मेरे लिए खराब हो चुका है, something like that. I have also one question to ourselves, as in the elders of the society or the guardians of the society, that what are we left with in terms of our families? For example, when a child or when a teenager or when an young adult feels that once my boyfriend or girlfriend has left me, I don't have anybody. So what about the fundamental relationships in the family? Why can't they bank upon that? And perhaps there comes the expectation of, aspect, or, it's most an instruction-based communication that we get to see between the parents and the children. Have you done this? Haven't you done that? Nothing beyond Instruct and admonish. Absolutely. These are the... So they do not have a cushion to fall back upon when they really face the turmoil of the world. Of course, heartbreaks will be there, but of course there are other people also around, even peers are around. But peers are not only there to pressurize us, peers are also there to give us shoulder. We miss that. We rather get the pressure component, which is very painful in today's world. A friend in need is a friend indeed. Absolutely. अच्छा, आजकल क्या ये समस्या जो हम डिस्कस कर रहे हैं peer pressure की और expectations की, आजकल कुछ ज्यादा है? बिकॉज़ हमारे जमाने में तो ऐसे नहीं, अभी कुछ बड़ी है। अभी कुछ बड़ी है और इसलिए हम लोग उसको यही कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। So you must be very particular in what type of friendship that you keep. जो आप बता रहे थे ना कि एक बार उसमें चले गए तो भेड़ के झुंड में चले गए तो बस
उसके बाद नहीं बस स्वामी जी देखिए, एक ये प्रेशर है, चल यार सिगरेट विगरेट पीते हैं, दैट्स यू नो ऑब्वियसली टेकिंग यू. हाउ अबाउट द अदर काइंड ऑफ प्रेशर व्हिच इज द गुड प्रेशर? हे कम ऑन, लेट्स गो एंड स्टडी टुगेदर यार, वी माइट बी एबल टू हेल्प ईच अदर. ये होता है आपके स्कूल में? हाँ, कैसे? In my college, actually, in my second year, some of my friends, we just thought of, it was about near to our exam. We just planned for group studies. We don't study alone, actually. Concentrate नहीं कर पाते ज़्यादा पढ़ने पे. वो एक ही लाइन पे आप अटके हुए हैं. तो दोस्त लोग के साथ बैठेंगे तो थोड़ा गप्पे भी मार लेंगे, पढ़ाई भी हो जाएगा. That's why we just. और सिगरेट विगरेट पीते हैं तब? Not actually. Not really. So आप सब लोग ढूंढ निकालते हैं जो अपनी जो डिफिकल्टीज हैं उसको मैनेज आप कर लेते हैं through discussing with her, through discussing with Swamiji, amongst your friends. So you have, what is it? What is the word I'm looking for? Backup support systems within your community, is it? On that note, I would like to ask a question to ma'am. The question is that, ma'am, if I'm controlling my mind for a good reason, then I'm controlling it for that good reason only. So is there any kind of way? But our mind will always force me to do the bad things, right? So I just want to overcome. I just want to overcome my mind, so that my mind would root me in the right way. Okay. So it's just controlling of the mind. Could you please elaborate on that? Thank you for your question, because I'm sure even some of our other friends will also think in this line. The bad things that you just mentioned, it's actually the temptations. We will be tempted to do a lot of things which we should not do. We know what we should do and what we should not do. Moral is that training we get from our childhood days. But there, I would tell you that when I'm tempted to do something, just hold yourself back. Ask yourself the consequences of your action. Because your life is the consequences of your own choices. So if you know that, okay, if I take this step, if I do this, if I violate this particular regulation or the norm, what is waiting for me? Will I be comfortable with that consequence? For example, if I restrict myself, maybe it will be painful. If I cross my restriction and I do that, maybe that will be unbearable. So it's a choice between something painful and something unbearable, maybe a short-term pain and a long-term pain. So there we can, hold ourselves back by our own rational thinking, because the solution lies right there within you. मैं युवकों को यही बोलता हूँ कि भाई मजा करो, मैं उसमें हरकत नहीं है, पर इस प्रकार से मजा करो कि बाद में सजा ना मिले. सिंपल इक्वेशन. अच्छा स्वामी जी, he was talking, चर्चा कर रहे थे power of mind के बारे में. So power of mind, how can you effectively use that? Yes, Dr. Banerjee gave us a few instances of that. एक तो पावर ऑफ द माइंड बढ़ेगा, उससे कंसंट्रेशन बढ़ेगा. व्हेन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो यू विल हैव अ बेटर परफॉर्मेंस. जब 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो जाएगी यदि कंसंट्रेशन रहेगा तो. ये तो आपको इंसिडेंट पता होगा, स्वामी विवेकानंद वहां पर बैठे थे अपने कमरे में और पढ़ रहे थे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, और वो शरद चंद्र चक्रवर्ती आके बोले कि अरे इसमें तो सारी जिंदगी निकल जाएगी. बोले क्या बात करता है, ये थोड़े दिन पहले आई है, 10 खंड मैंने पूरा कर लिया. इम्पॉसिबल. बोले ठीक है, 10 खंड में से पूछ ले प्रश्न. और कितने सारे प्रश्न पूछे, स्वामी जी सबके उत्तर दिए. तब शिष्य ने कहा स्वामी जी ये तो चमत्कार है. स्वामी जी का चमत्कार नहीं है, मन की एकाग्रता का परिणाम. मन की एकाग्रता हो तो 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में हो सकती है. सो दैट इज नंबर 1, कॉन्सेंट्रेशन आ सकता है. 1 पर्सन कैन इंक्रीज द पावर ऑफ माइंड बाई एफर्ट्स, बट उसके लिए वही स्वामी जी ने जो प्रोसेस की, शुद्धिकरण, प्यूरिटी ऑफ माइंड, मेडिटेशन, prayer, these are the various methods by which you can make the mind more powerful. I would just like to add something to it, if I may, that apart from what Maharaj Ji had just mentioned, let's say, for example, when we are preparing for our exams or we are studying and we are literally facing the concentration of problem, a very, useful, practical tip that one can use is start writing what you're reading. For example, maybe I have just read 5 points, close the book, try to write down. Even if you forget 2 points, open the book, see those 2 points again write down. Your brain will get adequate time to save the information that you were trying to rehearse. And you're also training it in the process. Exactly. Too. And every time you feel that, I can't remember those 2 points, that sense of failure will give you the push to next time read it properly. There you go. So friends, हर दिन हम किसी न किसी समस्या को लेकर परेशान रहते हैं. And sometimes we feel, as if दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान हम ही हैं. Let's take a look at something that we've
prepared for you and to see where that is addressed. अरे कंपेयर टू दैट हमारी प्रॉब्लम्स तो इतने माइनर है, क्या बताऊं। सलाम करता हूं मैं इन्हें। जिंदगी के असली हीरोज तो यही हैं। दे नो हाउ टू स्माइल आफ्टर ऑल। इन्हें कुछ भी रोक नहीं सकता। हमें सीखना चाहिए कि इनके जैसा बने ताकि हमारी दुनिया और भी बेहतर बन सके। सो यू स्माइल एंड मेक द होल वर्ल्ड स्माइल विथ यू बिकॉज वी बिलीव इन बी एंड मे। एब्सोल्युटली। आइए हम सब आज फिर से शपथ ले और वादा करें अपने आप से कि नो मैटर व्हाट कम्स इन लाइफ वी विल नेवर गिव अप। तो दोस्तों आज बस इतना है। अगले हफ्ते हम वापस आएंगे विवेकानंद आंसर्स के साथ यहीं पर। तब तक अपने पर विश्वास रखें और हंसते रहें और एक और बार हमारे लिए बी एंड मे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार 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 स्वामी जी, नमस्कार डॉक्टर जी एंड नमस्कार ऑल यू लवली पीपल। बाय बाय। Swami ji, before we leave, I would request you to please give this as a token of our appreciation to Dr. here, Banerjee here. Say thank you. Thank you so much for being with us. Please. सारी शक्ति विवेकानंद की वाणी और भक्ति।